Okay, so hi, welcome to Success Sports YouTube channel, and we're here with Kunal, who got into MNLE Mumbai and is going to be my junior this year. So yeah, introduce yourself. Okay, so hello everyone. Well, my name is Kunal Chaudhary and I got a All India rank of 452 in CLAT this year. And as my senior said, I'm going to join NLU Mumbai. Okay, great. So how was your experience preparing for CLAT? Like easy tha, tough tha? Well, it was certainly very hard for me because see, the thing was I opted for PCM in class 12 and was also preparing for CLAT without joining any coaching. So yeah, in the initial stages, like I was completely unaware about what the syllabus is, how I'm going to prepare, what kind of timetable should I follow. So to search about all those things while also preparing for my board exams, it was certainly difficult for me. Okay, so which subject was the easiest to prepare for out of the five? For me, the easiest subject was maths or quant, as the syllabus says. See, because in 11th, 12th also I had quant as in the syllabus. So yeah, it was easy for me. All I had to do was to revise some of the concepts, and that all for me. So any additional tips and tricks which like boosted your score and quant? Well, if you talk about quant or RCs, even if I say, it's all about practice. How much you practice, how much motivated you are to do new things. Because as much as you can research or how much you practice, that's all it depends upon. Okay, and which subject was the toughest? कि मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं था ये पढ़ाई करना. Legal खतरनाक आया था. अरे मतलब I haven't even knew about that subject before preparing for CLAT. And I mean, there are some kinds of judgment which are really confusing. Like there is Shaira Bano versus Union of India. Then there is Shah Bano versus Union of India. One is for triple talaq, one is for alimony. कहाँ से याद होगा? पता ही नहीं चलता था कौन सा क्या है. So what did you do to like overcome that difficulty? कि मतलब easy जाएगा तब. बार-बार रीड करा. बार-बार इन जजमेंट्स को रीड करा. मतलब अब भी मेरे को वही परेशानी आती है फिर भी प्रैक्टिस के बाद भी. Okay, but that's great. I really like your attitude towards legal. What role do you think your institution or a mentor plays for helping with your CLAT preparation? Well, in the last stages of my preparation, I joined Success Board and it really helped me a lot. I mean, the guidance provided by Prakhar Bhaiya and Govind Bhaiya is certainly a game changer for me, as I say, because उनने ही बताया था मेरे को कि सिलेबस में क्या कर तू टाइम टेबल कैसा फॉलो करना है तुझे ये सब उनने ही बताया था मेरे को so yeah it clearly helped me a lot. Okay, so apart from whatever you told me about quant and legal, what are your top 3 strategies which you will be like this is what got me into an NLU? Well, first of all, follow a timetable. I mean, आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं आज ये टॉपिक करना है मेरे को ये टॉपिक फिनिश करना ही है आज तभी आपका सिलेबस हो पाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है. इफ यू टॉक अबाउट जीके लीगल और इंग्लिश मतलब प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ता है आपको साल भर. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास. एंड बिसाइड दैट मोटिवेशन. आपको मोटिवेट रहना पड़ता है बिकॉज सी आप जब क्लैट का मॉक देते हो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं पहले भी बता चुका हूँ काफी बार कि साल भर आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही. मतलब स्टार्टिंग में आपने 30 स्कोर किया मॉक में क्या पता नेक्स्ट में आप 60 करो और आप वापस 50 मार्क्स पे ही आ जाओ. I still remember that the last mock which I gave before my CLAT exam, I scored around 60 in that. और फिर पर उसके बाद भी the main thing was कि मैंने अपनी मोटिवेशन नहीं खोई वरना मैं कर सकता था कि मेरे मार्क्स तो आ ही नहीं रहे मॉक्स में मैं क्यों ही जाऊं CLAT देने अगले साल ही दे जाऊंगा सीधा फायदा ही क्या है. So yeah, you need to stay motivated throughout the year because there are going to be many chances जब आपके will power try में आएगी. And besides that, yeah, as I said earlier, practice. जितनी practice आप कर सकते हो उतनी कीजिए. Whether it's about RCs or quant, practice सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, so one advice to anyone who's watching this and preparing for CLAT 2022 कि मतलब आपको एक बात बोलनी तो क्या बोलोगे? Well, see, if you are preparing for CLAT, it's like a journey. मतलब आप starting में आपको कुछ भी नहीं पता होता कि करना क्या है. फिर आप खुद से research कर रहे हो. आपके दोस्त आपको बता रहे हैं कि ये कर या आपके दोस्त तो आपसे ये भी बोलेंगे कि इसका पेपर भी होता है
क्योंकि हम आधों को तो पता भी नहीं that there's a exam for if you want to take admission in NLUs, तो उन्हें पहले तुम्हें ये समझाना पड़ता है कि हाँ ये क्लैट है, ये दूंगा मैं, नीट जी नहीं दे रहा हूँ मैं इस साल। तो वो होता है। फिर उसके बाद आप फिर रिसर्च करते हो, आपको फील होगा ये that the way you think really changes. I mean, मेरे को भी ये फील होता है कि अब इतने, क्योंकि देखो आप साल भर जो भी आरसीस पढ़ोगे वो या तो जो करंट इवेंट्स है उनसे रिलेटेड होगा या हिस्ट्री उससे रिलेटेड होगा, तो द वे यू थिंक रियली चेंजेस। सो या आप वो खुद भी फील करोगे आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे और एक साल के बाद दैट हाउ यू थिंक रियली चेंज। सो या इट्स अ नाइस जर्नी, at least it was for me. All right, Kunal, that was great and lovely talking to you, and all the best for your future. Thank you, Didi.